Hi guys, what's up? I'm Maithili and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and welcome to a monthly favorites video. We are gonna do January favorites. I have been wanting to start this series wherein I talk about the things that I have loved throughout the month. So of course, let's start with all the things that I have enjoyed using in January 2025. Without wasting any more time, let's get started. So I have a tray full of things that I want to talk about. I'm going to show you the tray. So yeah, let's get into the nitty-gritties of each and every product. Alright, so the first product has to be a fragrance, a perfume. I love perfumes. I have been a big fan of Bath & Body, especially for their body mists. So the first one, आपको हालत दिख ही रही होगी, सारा प्रिंट विंट निकल गया है because मैंने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है ये परफ्यूम. This is from their Gingham collection and ये है Gorgeous. I think the fragrance name is Gorgeous and it smells so good. It's a very sweet floral kind of a fragrance. If you're someone who enjoys sweet fragrances, you're gonna love this. It's very long lasting too, so of course give it a try. I would definitely recommend it. आई थिंक ये आपको तब खरीदना चाहिए जब नायका पे सेल आता है, तो इसको 799 में पड़ेगा. आई हैव ऑलमोस्ट एम्प्टीड द बॉटल एंड आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड अ न्यू वन जो आपने नायका हॉल में देखा होगा. आई एम ट्राइंग द ग्रीन वेरिएंट दिस टाइम. ऑलराइट, सो सिंस वी हैव स्टार्टेड विद फ्रेग्रेंसेस, द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस इज बाय रेने. इट्स देयर फ्रेग्रेंस कॉल्ड ब्लूम. This is for women. This is an EDP perfume. This is 15 ml bottle जो मैंने अभी recently ख़त्म की है. This is also a very sweet floral kind of a fragrance. I will pop the notes right here for you guys to see. But बहुत ही अच्छी fragrance है, especially for the night time. It's definitely a good fragrance. It's pretty long lasting too. And it's a really close dupe of the Caroline Herrera's Good Girl perfume. Moving on, another product that I have loved throughout the month of January. I've used it every single day. Is this is the Wishcare's AHA plus BHA body lotion. This has salicylic acid in it. It comes with niacinamide, grapefruit, blueberry and 10% AHA blend. This actually helps with detanning and it's a great body lotion to have. Winters में ज़्यादातर skin dry हो जाती है, although I don't have like extremely dry skin, but I do enjoy putting moisturizer especially in winters because थोड़ा dry लगता है. So yeah, definitely love this one. I did not end up finishing the entire bottle in January itself, but I've used half of it. So yeah, and I can tell you that it's a pretty good product. Another very important part of our life is sunscreen. Winters में भी sunscreen लगाना ज़रूरी होता है. In case you did not know that, I'm just putting it out there. Don't be under the myth कि अगर हम घर पे रहते हैं या अगर इट्स विंटर्स तो हमें सनस्क्रीन नहीं लगाना होता. दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सनलाइट इवन ड्यूरिंग विंटर्स एंड ऑल्सो द ब्लू लाइट दैट योर फोन्स एमिट. तो मैंने रिलीजियसली सनस्क्रीन लगाया है इवन इन द मंथ ऑफ जनवरी. एंड आई हैव एम्प्टीड द बॉटल ऑफ फिक्स डर्मा's Shadow SPF 50+ gel. Now this is a great sunscreen, a definite buy if you have oily or combination skin type. I'm saying this because मेरी skin oily है and for the longest time I used to hate applying sunscreen on my skin because oily skin पे जब आप sunscreen लगाते हो and it becomes all messy and greasy, you don't enjoy, right? So for the longest time I used to hate it, but मेरे को फिर समझ में आया कि okay, I don't have the right sunscreen to kind of use on my skin. So I use this. ये bottle ख़त्म हो चुकी है as you can see. So the gel-like finish really helps you to just blend the sunscreen seamlessly and बहुत comfortable लगता है skin पे भी. This is PA++ and this protects you from UVA and UVB. It's a non-comedogenic product. Non-comedogenic का मतलब ये होता है कि आपकी skin के जो pores है वो ये क्लॉग नहीं करता है. देर आर सर्टन स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो नॉन कमीडोजेनिक नहीं होते हैं. दैट मीन्स कि वो जो आपके जो पोर्स है ऑन योर स्किन वो उनको क्लॉग कर देंगे, बंद कर देंगे. और अगर वो बंद हो जाते हैं तो उसमें डर्ट एंड सब कुछ अक्यूमुलेट हो जाता है. सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट. सो ऑलवेज ट्राई एंड ऑप्ट फॉर नॉन कमीडोजेनिक प्रोडक्ट्स.
ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग दैट आई हैव टू टॉक अबाउट. मैंने पूरे जनवरी जितनी भी बार मैं बाहर गई हूँ और मैंने लिपस्टिक लगाई है, आई हैव यूज्ड अ सिंगल लिपस्टिक थ्रू आउट द मंथ, विच इज़ द वेरीफाइड्स बटर ब्लॉन्डी. वेरीफाइड इज़ अ brand by Anam Chashmawala. She is a very huge influencer, content creator. She's been in the YouTube space for around 10-12 years at this point, which is so good and I enjoy watching her videos. तो मैंने genuinely ये खरीदी थी बटर ब्लॉन्डी, आई थिंक इन दिसंबर जब उनका सेल चल रहा था, तब मैंने ख़रीदा था ये. एंड दिस इज़ सच अ गुड फॉर्मूला. ओ माई गॉड, इफ़ यू आर समवन जिसको मैट लिपस्टिक अच्छी लगती है बट फॉर्मूला नहीं अच्छी लगती हर किसी की, बिकॉज बहुत ड्राइंग होती है एंड वो क्रैक्स दिखते हैं आपके लिप्स पे, डेफिनेटली बाय दिस वन. ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. आई एम नॉट गोना से दैट इट्स कम्प्लीटली इनएक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव है बट आई फील लाइक इट्स वर्थ द मनी, बिकॉज इसकी जो फॉर्मूला है इट्स वेरी लाइट वेट. ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने मैट लिपस्टिक लगाई है. एंड आई हैव बीन थॉरली ऑब्सेस्ड विद दिस लिपस्टिक थ्रू आउट जनवरी. मैंने रोज़ ऑफिस में यही लगाई है. दिस इज़ अ वेरी न्यूड ब्राउन काइंड ऑफ अ कलर, अ परफेक्ट न्यूड फॉर पीपल लाइक मी, जिसको तो मेरे को बहुत डार्क लिपस्टिक्स नहीं पसंद है. सो आई नॉर्मली लाइक न्यूड्स एंड ब्राउन्स. तो ऑफिस में अगर आप जाते हो, दिस इज़ अ ग्रेट लिपस्टिक टू वेयर. ये अच्छा खासा इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, ये रहेगी. बीच में शायद आपको थोड़ा सा टचअप करना पड़े, बट आई think that's okay, you can manage that, right? So love this product. Moving on, I have a food item that I have loved throughout the month of January. मैंने बहुत खाया है इसे. I was actually trying to look for like healthier options when it came to eating cookies and biscuits and all of it. This is the Sunfeast Farmlight Super Millets Ragi and Jowar Choco Chip Cookies. It has no added maida, right? It is a good source of iron, protein and fiber. And ये इतना टेस्टी है खाने में कि आपको लगेगा भी नहीं कि ये रागी एंड ज्वार से बना है. ठीक है, इट लिटरली फील्स लाइक यू आर ईटिंग अ नॉर्मल चॉकलेट चिप कुकी एंड इट्स सो टेस्टी. It's so yum that I have loved it. So it comes in a box like packaging, ऐसा कुछ. ठीक है, और इसमें you have like single cookie. This is what the cookie looks like. It's so cute and it's so yum. If you're also looking for like healthier alternatives to like मैदा वाले biscuits, then definitely give this a try. I'm sure you're gonna like it. Yeah, so these were some of the products जो मैंने January month में try किया and मेरे को बहुत अच्छे लगे, that I thought that I should share it with you guys also. And I'm also gonna include 3 more things in this video, which is my favorite song. My favorite song for the month of Jan was Die With A Smile. It's a beautiful song. Please go hear it if you haven't. My favorite series for the month of January has been The Big Bang Theory. मैं ऑलरेडी 3-4 बार देख चुकी हूँ. आई हैव स्टिल बिन ऑब्सेस्ड विद द बिग बैंग थियोरी. इट इज़ अ साइंस फिक्शन काइंड ऑफ अ series if you want to watch it. It's pretty long. It has like 10-12 seasons, so yeah, take your time, but it's a nice comedy kind of a thing, so you're definitely gonna enjoy it if you enjoy that kind of a genre. I absolutely loved it, so much so कि मैं ये 5वीं बार देख रही हूँ, but I have watched it throughout the month of January. Lastly, I'm gonna talk about my favorite moment from the month of January. So January has been very exhilarating. It felt like it was the longest month and a longest start to the year 2025. मैंने बहुत सारी कुकिंग की है. तो मैं जब भी घर पे आती थी तो आई यूज़ टू कुक अ लॉट, तो मैंने बहुत सारी कुकिंग की है. My favorite moment per se of the month has to be the fact that I visited the Mahakumbh, which came after 144 years. So I think I am super grateful and blessed to be able to have that kind of an opportunity and to, and I saw the news कि अभी काफ़ी सारा stampede चल रहा है. Things are, not going well in Prayagraj because of the Kumbh. And I went at a time where the Kumbh had just begun. And I went with my family, so it was a very good feeling to take that dip at the Triveni Sangam. That has to be my favorite moment from the month of January. In case you guys want to buy any of these products, you can always check out the description box. It will have all the links. And yeah, thank you so much for watching the video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please like this video, share it with your friends, and subscribe to my channel without fail.
And I'll see you in my next video. Till then, bye.